I am ആ, very ഞാൻ I'm very happy to be here. ഞാൻ ഒത്തിരി സന്തോഷമുള്ളവനാണ്. मैं काफी खुश हूं यहाँ पर आने में. May the Lord speaks to everyone. ദൈവം നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കട്ടെ. പ്രഭു आप सबसे बात करें आज की रात. Straight away I can see the angels in your rooms. ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാരെ നിങ്ങളുടെ മുറികളിൽ കാണുന്നു. मैं दूतों को देख रहा हूं आपके कमरों में. Hallelujah. Thank you, Father. You are straight away coming and taking control of every house, every internet, every electricity. കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങ് എല്ലാത്തിന്റെ അധികാരം, എല്ലാ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ എല്ലാ അധികാരവും അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കുന്നവർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. Your angels are there. അങ്ങയുടെ ദൂതന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. Your kingdom is coming down. അങ്ങയുടെ രാജ്യം ഇറങ്ങി വരുന്നു. आपका राज्य यहाँ आ रहा है. You are the one interested to give the kingdom to every one of us. അങ്ങ് കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങയുടെ രാജ്യം തരുവാൻ വേണ്ടി താല്പര്യപ്പെടുന്ന ദൈവമാണല്ലോ. You said, fear not. It's a father's joy to give you and I the kingdom of God. അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ, ഭയപ്പെടേണ്ട, ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമാണ്, ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ അവന്റെ രാജ്യം തരിക എന്നുള്ളത്. It is in Luke 12:32. Let it take place for everyone right now. ലൂക്കോസിന്റെ 12-ാം അധ്യായത്തിലുള്ളത് എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ. Luke 12:32 says, it's a father's joy to give you and I the kingdom. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 12-ാം അധ്യായത്തിന്റെ വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ സന്തോഷമാണ് നിങ്ങളെ ദൈവരാജ്യം തരുന്നത്. So let us receive the kingdom and the power of the devil leave in Jesus' name. ആ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി നിങ്ങളിൽ ആവസിക്കട്ടെ, പിശാചിന്റെ ശക്തികൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി. Where there is a kingdom, there is miracle, there is healing, there is blessing. Everything will flow from the throne. എവിടെ ദൈവരാജ്യമുണ്ടോ അവിടെ ശക്തിയുണ്ട്, അവിടെ വിടുതലുണ്ട്, അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ഉണ്ട്, അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നു. Where the kingdom of God is there, there is no kingdom of darkness. The kingdom of light is taking full control every house, every heart, every mind right away in Jesus' name. എവിടെയൊക്കെ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അവിടെ നിന്ന് പിശാചിന്റെ രാജ്യം, പിശാചിന്റെ ആധിപത്യം എടുത്തു മാറ്റിക്കളയപ്പെടും. അവിടെ അന്ന് പോലെ പ്രകാശം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഏറ്റെടുക്കട്ടെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ. In this kingdom, Jesus is the king. Jesus is coming straight away. Wherever the kingdom is there, Jesus will be the king. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. അവൻ യേശു ക്രിസ്തു രാജ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. He is coming to your every mind, every heart right away in Jesus' name. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക്, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് യേശു ക്രിസ്തു വരികയാണ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. Jesus came to the earth to talk about the kingdom of the Father. യേശു മസീഹ് ജഗത് में आया. യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ വന്നത് യേശു രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. He started in Matthew chapter 4:17. This is the way his ministry started, speaking about the kingdom of God. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മത്തായി സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായം 17-ാം വാക്യത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് തന്റെ മിനിസ്ട്രി തുടങ്ങുന്നത്. And Acts chapter 1 verse 3, you can see he finished the ministry by talking about the kingdom of heaven. And കർത്താവ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 1-ാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാണ് നിർത്തുന്നത്. So the entire plan of the Father to bring the kingdom into you and I. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പിതാവിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പദ്ധതി എന്തെന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യം നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. प्रभु यीशु मसीह का यही एक रहस्य है कि प्रभु का राज्य हमारे जीवन में वो स्थापित कर पाए. When the kingdom is coming, every sickness will leave. और जब प्रभु का राज्य स्थापित हो जाता है तब सभी बीमारियां दूर हो जाती है. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യം നമ്മുടെ നടുവിൽ വരുമ്പോൾ എല്ലാ രോഗങ്ങളും മാറിപ്പോകും. When the kingdom is coming, king is coming. And ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം വരുമ്പോൾ രാജാവാണ് വരുന്നത്. രാജ്യ जब आएगा तब राजा भी आएगा उसके साथ. Seek ye first the kingdom and its righteousness. And വചനം പറയുന്നു, ആദ്യമേ ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിപ്പിൻ, അവന്റെ ദൈവരാജ്യത്തെ അന്വേഷിപ്പിൻ, അപ്പോൾ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചേർന്ന് കിട്ടും. That righteousness of the kingdom is important. ആ നീതി, ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ നീതി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. It is different from the earthly righteousness. അതൊരു ഭൂമിയുടെ നീതിയെക്കാളും വ്യത്യസ്തമായതാണ്. If you notice, everywhere in the YouTube they have their own righteousness to preach. യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അവരുടെ നീതിയെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കാനുണ്ട്. ധാർമ്മികത सब लोगों की अलग होती है. But Father sent some servants in this world like Pastor Joseph Matthew, Pastor Sam. There are so many people. They bring the kingdom news to this earth.
പക്ഷെ ദൈവരാജ്യത്തെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പാസ്റ്റർമാരെ ദൈവം അയക്കും. അവരുടെ ദൈവത്തിന്റെ നീതി തന്നെ അവർ ഈ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിതമാക്കും. When I met Pastor Joseph Matthew in Dubai, Sharjah, I understood ദുബൈയിൽ വെച്ച് he is also working like me. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി താനും എന്നെ പോലെയാണ്. मेरे उनसे मिला तो मुझे समझ आया कि वो भी मेरे साथ मेरे समान ही प्रवृत्ति करते हैं. He is working in Jammu Kashmir for the Lord. वो जम्मू कश्मीर में काम करते हैं. So we were connected in the spirit. तो ഞങ്ങൾ ആത്മാവിൽ ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ആകുവാൻ मैं आत्मा में उनके साथ जुड़ गया. If you are not ready to die, you cannot carry the cross. നിങ്ങൾ മരിക്കുവാൻ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്രൂശ് ചുമക്കാനും തയ്യാറല്ല. अगर आप मरने के लिए तैयार नहीं है तो आप क्रूस उठाने के लिए भी तैयार नहीं है. If you are speaking about your suffering and your problem bigger, you never ready to carry the cross for the Father in heaven. നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചും പ്രതിസന്ധികളെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾ വലുതാക്കി സംസാരിക്കുവാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുരിശെടുത്ത് കർത്താവിനോട് കൂടെ നടപ്പാൻ യോഗ്യരല്ല. So you may be a child in the kingdom of heaven. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ശിശുവായിരിക്കാം ദൈവരാജ്യത്തിൽ. But you are not a matured people of God. നിങ്ങൾ മെച്യൂർഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു യോഗ്യനായ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ദൈവം കാണുന്നത്. Then only you will be a fighter, you will be a warrior. മ്യൂട്ട് ആയി. Then only you will be a warrior, then only you will be a fighter. നിങ്ങൾ മെച്യൂർഡ് ആകുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ വാരിയറായി മാറുന്നത്. Amen. God wants to make every one of us a warrior. ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാം വാരിയർ ആക്കി മാറ്റാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Wherever you are going to rule that place. നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ ജീവിക്കുന്നത് അവിടെ എല്ലാം നിങ്ങൾ ഭരിക്കുന്നതാക്കി മാറ്റുവാൻ ദൈവം. What you are saying, it's going to happen. നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു അത് സംഭവിക്കും. The rule is given to you and I. നീതിയും ന്യായവും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത്. We were seated with Christ in the throne to rule this world. നമ്മൾ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ദൈവത്തോട് കൂടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നവരാണ്. Amen. From there we are ruling this earth. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയെ ഭരിക്കുന്നത്. We were seated far above the principalities and power. We were seated far above. Devil is far below. എല്ലാ അധികാരങ്ങൾക്കും ആധിപത്യങ്ങൾക്കും മീതെയാണ് ദൈവം നമ്മളെ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പിശാചിന്റെ ആധിപത്യം നമ്മുടെ കീഴെയാണ്. Hallelujah. So when we will understand this truth, നമ്മൾ ഈ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ Galatians chapter 4, if you read from 4 to 7, God is telling very clearly here. Galatians 4, verse 4 to 7. ഗലാത്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 4-ാം വാക്യം മുതൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. Until people are not matured, they cannot take this position. എന്താണ് നിങ്ങൾ മെച്യൂർഡ് ആകുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് പുത്രനെങ്കിലും അവകാശം ഇങ്ങനെ ലഭിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. You are child, no doubt, but you don't have a power. നിങ്ങൾ മകനാണ്, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അതുവരെ അധികാരമില്ല. You are under somebody. നിങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കീഴിലാണ്. So you are controlled by somebody. നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളിനാൽ നിങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ്. But today God is setting you free all in Jesus name. പക്ഷേ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ ഫ്രീ ആക്കുന്നു, വിട്ടയക്കുന്നു. The truth which is coming to you bring a great revival in your heart. और जो सच्चाई आज की रात में बोल रहा हूँ वो तेरी जिंदगी के अंदर एक बेदारी पैदा करेगा. How you can be a strong person? നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ശക്തിശാലിയായ മനുഷ്യനാകാൻ കഴിയും? कैसे आप एक शक्तिशाली मनुष्य बन सकते हैं? Christ in me and Christ working through me. Christ is ruling through me. ക്രിസ്തു എന്നിലുണ്ട്, ക്രിസ്തു എന്നിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ക്രിസ്തു എന്നെ ഭരിക്കുന്നു. So the kingdom of God coming through me to this earth. ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവരാജ്യം വരുന്നത് എന്നിലൂടെയാണ്. Amen. Keep your right hand upon your head and say, I am the tactical headquarters for the Lord in this earth. നിങ്ങളുടെ കരം നിങ്ങളുടെ തലയിൽ ശിരസിൽ വെച്ച് പറയൂ, ദൈവരാജ്യം നടപ്പിലാക്കുന്ന അധികാരിയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഞാൻ. I am the ruler of this earth. ഞാൻ ഈ ഭൂമിയെ ഭരിക്കുന്ന ആളാണ്. God works through me. ദൈവം എന്നിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കും. God's will as it is in heaven, it's going to take place through me from today in Jesus name. ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എങ്ങനാണോ അത് എന്നിലൂടെയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. That's what going to happen. That's what the kingdom of God is coming down to us. അതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. In the Old Testament, people all fighting to bring the kingdom down. പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദൈവമായിട്ട് മല്ല് പിടിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യത്തെ കീഴെ കൊണ്ടുവരുവാൻ. By force they brought the kingdom.
അവർ ബലത്താൽ ശക്തിയാൽ ദൈവരാജ്യം കൊണ്ടുവന്നു. Samuel was fighting, and he brought the kingdom. He cast out entire Palestine, the entire lifetime of Samuel. Palestine cannot enter. ശമൂവേൽ എന്ത് ചെയ്തു? ഫലസ്തീനിയരെ അവൻ ഓടിച്ചു, അവരുമായിട്ട് മല്ലിട്ടു, അവരുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തു ദൈവരാജ്യം കൊണ്ടുവന്നു. Elijah fighted, said, according to my word, there is no rain, there is no dew. He commanded the rain to stop, and he commanded the rain to come. ഏലിയാവ് ഫൈറ്റ് ചെയ്തു, ഏലിയാവ് യുദ്ധം ചെയ്തു. അവൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വാക്ക് അല്ലാതെ, എന്റെ വാക്കിനാൽ അല്ലാതെ മഴയും മഞ്ഞും പെയ്യത്തില്ല. അവൻ യുദ്ധം ചെയ്തു, അവരുമായി മല്ലിട്ടു. But for us, Jesus brought the kingdom. Jesus brought the kingdom, and Jesus brought his righteousness. യേശു അവന്റെ നീതി നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. It's free. അത് ഫ്രീ ആണ്. So what we have to do now? നമുക്ക് എന്താണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത്? Expand the kingdom. നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? हम क्या कर सकते हैं? इसे बढ़ाना है हमें. Just expand the kingdom. प्रभु के राज्य को बढ़ाना है. So in your world, you are the ambassador of Christ. और जहां आप हैं, वहां पर आप प्रभु यीशु मसीह के अधिकारी हैं. If you say no corona cannot enter that house. अगर आप बोलेंगे कि कोरोना नहीं है, तो आपके घर के अंदर कोरोना नहीं आएगा. Because you are the ruler, you are the ambassador. कारण निंगलान अधिकारी, आप अधिकारी हैं उसके. So in Yemen, we have this power of God in our hand. यमन के अंदर हमारे पास ये शक्ति है. यमनिल ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അധികാരമുണ്ട്. In this 2 years, no one died in corona whoever connected with our church. എന്റെ സഭയുമായി, ഞങ്ങളുടെ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആരും കൊറോണ കൊണ്ട് മരിച്ചില്ല. मेरे चर्च से जुड़े कोई भी व्यक्ति कोरोना के द्वारा मृत्यु नहीं हुई. No heart attack, no kidney failure. किसी का हार्ट अटैक नहीं हुआ, किडनी फेलियर नहीं हुआ. No diabetic, no BP, nothing. Why? We carry the kingdom of heaven in our life. किसी के अंदर डायबिटीज नहीं है, बीपी नहीं है. क्यों? हम प्रभु के राज्य को हम अपने अंदर लेके चलते हैं. This Al-Qaeda, ISIS, they don't have a power over the church. We have the power over this earth. अल-कायदा, ISIS, किसी के पास भी कोई अधिकार नहीं है इस भूमि के अंदर, इस कलीसिया के ऊपर. हमारे पास सारा अधिकार है. In 2015, they said they brought 2 flight ISIS people to the Yemen, and they are going to kill everybody. 2015 में 2 हवाई जहाज ISI के ओर से आया और बोलने लगे कि हम सबको मार देंगे. 2015 2 പ്ലെയിനുകൾ വന്നു ISIയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന്. I told God, Lord, ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു, मैंने प्रभु से कहा, in early days how the fight will go. Enemy will kill one another, we will improve, the church will improve. And मैंने कहा कि पिछले दिनों में, बीते दिनों में ओल्ड टेस्टमेंट्स में कैसे प्रभु उन्होंने प्रार्थना की और दुश्मन आपस में लड़े और जो कलीसिया है वो बढ़ती रही. Let it happen in Jesus name. वो मेरे जीवन में भी हो, हमारे जीवन में यीशु And it was happen. वो संभव हुआ, वो हुआ हमारे जीवन में. Sunni will destroy the Shia will destroy the Sunni, but we are protected from heaven in Jesus name. सुन्नियों ने शियाओं को मार दिया, शिया ने सुन्नियों को मार दिया, और हम यीशु मसीह के नाम से चंगाई और सुरक्षित थे. How many of you want this kingdom power in your life from today? कितने लोग आज के बाद अपने जीवन में इस राज्य के अधिकार को प्राप्त करना चाहते हैं? You can check your body now, you are healed completely. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പരിശോധിക്കാം, നിങ്ങൾ സൗഖ്യമായിരിക്കുന്നു. आप अपने शरीर को अभी देख सकते हैं, आप में चंगाई आ चुकी है. All your pain is gone in Jesus name. आपके सारे दर्द यीशु मसीह के नाम से जा चुके हैं. When Jesus was preaching the kingdom of God, automatically healing is taking place. और यीशु मसीह जब प्रचार कर रहा था प्रभु के वचन में, चंगाई तभी हो चुकी थी. The healing is free. और जो चंगाई है वो मुफ्त में है. The devil aim is to remove the word of the kingdom from your heart. That's all. और शैतान की जो इच्छा है वो ये है कि आपके जीवन के, आपके हृदय के अंदर से प्रभु के वचन को हटा दे. If you go for a healing ministry, devil is happy. Go for healing, go for blessing. He is not worried. और अगर आप चाहते हैं कि आप वही सेवकाई इस रूप से करें जहां चंगाई होती है, जहां चमत्कार ही होते हैं, वो तो शैतान खुश है आपसे. Because you are a baby, you need ice cream, you need a chocolate for every day. और वो इसलिए खुश है क्योंकि आप एक बच्चे के समान हैं. आपको आइसक्रीम चाहिए, आपको चॉकलेट चाहिए रोजाना. But if you are coming program like this for a kingdom revival, और अगर आप इस रूप की मीटिंग के अंदर आते हैं जहां पे राज्यों की बेदारी के लिए प्रार्थना करते हैं. Matthew 13 verse 19 says, the word of the kingdom is coming, devil is coming to take that word out of your heart.
और मत्ती के सुसमाचार 13वां अध्याय के 19वां वचन कहता है कि जब वचन आपके अंदर होता है, शैतान किस लिए आता है? उस वचन को आपसे छीनने के लिए आता है। The Satan is not worried about your healing or your miracle. He's not worried. शैतान आपकी चंगाई और आपकी अद्भुत और चमत्कार से कोई मतलब नहीं रखता है। Satan is worried who is carrying the kingdom. और शैतान इससे ताल्लुक रखता है जो प्रभु के वचन को, प्रभु के राज्य को लेकर चलता Who है। is carrying the kingdom? कौन प्रभु के राज्य को To लेकर चल whom the रहा है? kingdom is given? ആർക്കാണ് ദൈവരാജ്യം കൊടുത്തത്? അതിലാണ് പിശാചിന്റെ ശ്രദ്ധ। Who can enter the kingdom? ആരാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? Who can rule from the kingdom? ആരാണ് ദൈവരാജ്യത്തെ ഭരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അവരിലാണ് പിശാചിന്റെ ശ്രദ്ധ। This is what going to happen today for every one of us in Jesus' name. और എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഇതാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ രാത്രിയിൽ You യേശുവിൻ നാമത്തിൽ। carry the power of the kingdom from tonight in Jesus' name. और आप प्रभु के राज्य की शक्ति को आज की रात से लेकर अपने अंदर ले जाने वाले The हैं। word of the kingdom is coming to you. और वचन जो प्रभु के राज्य के है वो आपके अंदर आ रहा है आज की We रात। all know the time of baptism. We are seeing the kingdom. और जब 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 बैप्टिज्म के समय, बपतिस्मा के समय हम देखते हैं, हम प्रभु के राज्य को देखते हैं। When you are having revelation, you are near to the kingdom. जब आप रेवलेशन को लेकर अपने अंदर से चलते हैं तो हम राज्य के निकट हैं हम। When you believe like a child, you are enter the kingdom. और जब आप एक बच्चे के समान, एक शिशु के समान आप विश्वास करने लगते हैं, तब आप प्रभु के राज्य के अंदर प्रवेश कर चुके होते हैं। When you are becoming a matured son, you are the heirs of the kingdom. और जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आप युवक बन जाते हैं, तो आप उसके अधिकारी बन जाते हैं, आप अवकाशी बन जाते हैं। So this is the stages. और ये है आपके स्तर। I will give the Bible reference. You can read it later. और मैं रेफरेंस आपको दूंगा और आप उसे बाद में पढ़ सकते हैं। John 3:3. John 3:3. See the kingdom. यूहन्ना की सुसमाचार 3रा अध्याय 3रा वचन में हम देखते हैं कि क्या प्रभु का राज्य है। Mark 12:34. Nearer to the kingdom. मरकुस के 12वें अध्याय में हम देखते हैं कि हम प्रभु के राज्य के पास में हैं। Matthew 16:19. Key of the kingdom. मत्ती के सुसमाचार 16वां अध्याय 19वां वचन में हम देखते हैं कि प्रभु के राज्य की कुंजी क्या है, चाबी क्या है। Roman 8:17. Heirs of the kingdom. और रोमियो की किताब में हम पढ़ते हैं 8वां अध्याय में हम देखते हैं कि हम अवकाशी हैं प्रभु के राज्य के, ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അവകാശികളാണ് നാം എന്ന് റോമൻ ലേഖനം 8ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു। This is enough for you today. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്നത്തേന് ഇതൊക്കെ മതി। Who is having the key? ആരുടെ കയ്യിലാണ് താക്കോലുള്ളത്? किसके पास आज की रात चाबी है? Church. കलीസിया के पास। Body of Christ. ദൈവത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ സഭയുടെ കയ്യിലാണ്। Key is given to the church. ദൈവസഭയ്ക്കാണ് ദൈവം താക്കോൽ കൊടുത്തത്। കലീസിയാക്ക് उसने चाबी दिया। Who is building the church? ആരാണ് സഭ പണിയുന്നത്? कौन अपनी कलीसिया को बना रहा है? Matthew 16:18 says, I will build my church. No power of hell will prevail over the church. मत्ती की सुसमाचार 16वां अध्याय का 18 वचन कहता है कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, शैतान की कोई भी अधिकार उससे जीत नहीं पाएगा। Why there is no operation in our church? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സഭയിൽ ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ? क्यों हमारी कलीसिया में ऑपरेशन नहीं होता? Jesus, the head of the church. यीशु मसीह हमारी कलीसिया का सर है। It is not my plan. Jesus' plan. ये मेरी कोई योजना नहीं है, प्रभु की योजना है। Kingdom plan. ये प्रभु के राज्य की योजना है। Who is the head of the church? कौन है प्रभु? कौन है कलीसिया का सर? Jesus Christ. यीशु मसीह। Who is the king of the kingdom? इस राज्य के राजा कौन है? Jesus Christ. यीशु मसीह है। Who is building the church? Who is building the church? कलीसिया को कौन बना रहा है? സഭയെ ആരാണ് പണിയുന്നത്? Father God. പിതാവായ ദൈവം, പിതാ परमेश्वर। Who is protecting the church? സഭയെ ആരാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്? कलीसिया की रक्षा कौन कर रहा है? Holy Spirit. पवित्र आत्मा, परिशुद्धात्मा। Hallelujah. So what we are doing? What we are doing? നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? Simply obeying. നമ്മൾ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്। प्रभु की आज्ञा कर रहे हैं हम तो बस। You know what is happening in today's world? आज की इस संसार में क्या हो रहा है? This real church is coming all over the world.
ये सच्ची सभा जो कलीसिया है वो हर एक जगह को प्रभु उठा रहा है। Don't think corona is ruling. We are the rulers of this church. Hallelujah. Rulers of this world. Hallelujah. ये मत समझो कि कलीसिया के ऊपर कोरोना का अधिकार है, नहीं, इस राज्य के ऊपर, इस कलीसिया के ऊपर हमारा ही अधिकार है आज के दिन। If corona is not coming, we won't come in Zoom. और अगर कोरोना नहीं आता तो हम जूम के अंदर ऐसे नहीं मिलते। We want to have the big building with all the sickness. हमें तो हर एक वो चाहिए बड़ा कमरा जहाँ पर कौन आता है, बीमार लोग आते हैं। Forgot the kingdom plan. We preach only about healing, 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 blessing, blessing, and everybody like a baby. और हम तो वही करते हैं, भूल गए प्रभु के राज्य को और वचन को। हम क्या प्रचार करते हैं, हम कहते हैं कि तू आशीषित हो जाएगा, तू चंगाई पा जाएगा, हम तो यही प्रचार करते हैं। I challenge you in Jesus' name. The pain left your body. Never ever come back in Jesus' name. और मैं इसको चैलेंज करता हूं कि अगर आपके अंदर से आज की रात एक दर्द जो है वो हट चुका है, वो कभी वापस नहीं आएगा आपके शरीर के अंदर। This is free from the Father. ये मुफ्त है पिता परमेश्वर के द्वारा। God told you and I to rule the world, not with sickness, not with fear. और प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम बीमारी के साथ, तुम दर्द के साथ, तुम डर के साथ इस राज्य को राज्य करो। Never think like that. Devil is not equal. प्रभु के और शैतान की कोई तुलना ही नहीं है। He is not equal. कोई तुलना नहीं When है। the light comes, darkness has to leave. और जब प्रकाश आता है तो अंधकार को जाना ही होता है। When you carry the kingdom of God, there is no place for the kingdom of darkness. और जब आप राज्य को वहां पर स्थापित करते हैं तो शैतान का राज्य वहां कोई स्थान नहीं होता। It is fully different. You are fully powerful. ये बिल्कुल बदला सा है, आप एक शक्तिशाली मनुष्य हो जाते हैं। Do you think God keep Satan equal level and put you there before Satan like fighting boxing like this? No. क्या आप ये सोचते हैं कि प्रभु ने आपसे किसी के लिए लड़ाई करने के लिए, सैटन से लड़ाई करने के लिए वहां रख दिया है? No. That's a lie of the devil. That's a lie of the devil. ये तो बस शैतान की झूठ है। That's a liar. He is a father of lie. और शैतान जो है वो झूठ का पिता है। You have to say the same word, what you want to rule, what you want to do. That's it. It will happen one day in your eyesight. और आपको वो ही बोलते रहना है जो आपके जीवन में आप पाना चाहते हैं। राज्य के अंदर जो भी देखना चाहते हैं उसे बोलना पड़ेगा और वो एक दिन आप देखेंगे आपके जीवन में। I will give you some points why the church is not powerful these days. और मैं आपसे कुछ बिंदुओं को बांटना चाहूंगा जहां पे मैं बताऊंगा कि आज की कलीसिया शक्तिशाली क्यों नहीं है। The requirement of the Lord is not fulfilled in the body of Christ. और आज जो है कलीसिया के अंदर या प्रभु के शरीर के अंदर प्रभु की इच्छा पूर्ण नहीं होती। How the church was built. और कैसे इस कलीसिया की निर्माण हुआ। Jesus Christ don't like Peter. Peter always blaming Jesus because Peter is a old man. Jesus is a small boy. 33. Peter was almost 50. और यीशु मसीह जो है पतरस से ज्यादा प्रेम नहीं रखते थे, क्योंकि पतरस जो है प्रभु यीशु मसीह को कोसता रहता था, क्योंकि पतरस तो 50 साल का था और यीशु मसीह 33 साल के थे। Jesus asked a question, what do you think about me? What the people are telling about me? Suddenly answer came from heaven to Peter, not for other people. Answer came from heaven for the question of Jesus. और यीशु मसीह ने पतरस से पूछा कि तुम क्या सोचते हो कि मैं कौन हूँ? लोग क्या सोचते हैं कि मैं कौन हूँ? और प्रभु का जो वचन है, प्रभु का जो उत्तर है वो सीधा हेवन से आया, स्वर्ग से पतरस के द्वारा आया। For all the questions in the earth, answer will come from heaven. और जो भी प्रश्न आप इस भूमि पर, इस संसार पे, पृथ्वी पर पूछेंगे, जवाब स्वर्ग से ही आएगा। Peter gave the answer, you are the son of the living God. Suddenly Jesus replied, flesh and blood this is not revealed. My Father in heaven, he revealed it to you. So I am going to work with you, Peter, even I don't like. The church will be builded upon this revelation. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये स्वर्ग से तुम्हें रिवील हुआ है, स्वर्ग से तुम्हें खुलासा किया गया है। तेरे शरीर और तेरे रक्त ने, तेरे इस लहू ने तुझे नहीं समझा। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि हाँ, मैं तुझसे ज्यादा प्रेम नहीं रखता, लेकिन मैं इस दर्शन के ऊपर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। So what is the requirement to build the church? और कलीसिया को बनाने के लिए क्या चाहिए आज हमें? Revelation from the Father. दर्शन की जरूरत है हमें। The secret behind the word of God, the Father will reveal it to the pastor. This is called pastor, spiritual father. और जो है, जो वचन की जो कुंजी है, जो सीक्रेट है, वो स्वर्ग से किसी के ऊपर आता है। वो है पास्टर, जो होता है कि आत्मिक पिता।
Now Peter got the revelation. Jesus said, I don't like you. It's okay, but Father likes you. Father gave the revelation. So you are the head of the church. So the church will be builded upon this revelation. और यीशु मसीह ने शायद कहा होगा कि हाँ मैं तुझसे ज्यादा प्रेम नहीं रखता पतरस, लेकिन जबकि परमेश्वर खुदावंद ने तुझे वो खुलासा किया है उस रहस्य का, हाँ मैं तेरे साथ काम करूंगा. So this is the way church is builded. और इस रूप से कलीसिया का निर्माण So होता है. every member in the church, they have to connect with the spiritual father correctly. और जहां देखते हैं कलीसिया के निर्माण सही से तभी होता है जब हर एक विश्वासी कलीसिया के अंदर एक आत्मिक पिता से जुड़ा होता है. This is not your opinion or my opinion. और सिर्फ ये हमारी और मेरी और आपकी जो है वो आशय नहीं है ये. What is happening today? Some churches, आज की कलीसिया में क्या हो रहा है देखें. they rule the pastor. They'll make a committee. They will say, no, pastor, you should not do this. Pastor, you have to do this. Not like that. विश्वासी क्या करते हैं कि कमेटी बना लेते हैं और पास्टर के ऊपर राज करने लगते हैं कि पास्टर ये मत करना, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है. God is coming today यीशु मसीह आज आ रहा है and make the people to connect with the pastors like Ur and Aaron with Moses. 70 people with Moses. That kind of church is rising in this corona period. और देखो कि आत्मिक पिता की हमें जरूरत है. देखिए आरन के साथ लोग थे, मूसा के साथ उसके 70 लोग जुड़े हुए थे. ऐसे हमें होना है. This is the foundation of the revival. और ये है जो बेदारी की स्थापना जहां किया जाता है. Then the church will speak forgiveness for everybody. God will forgive. कलीसिया जो है जो सभी से माफ करने लगते हैं, प्रभु माफ करने लगते हैं. Then prophecy will come in the church. तब हमारे अंदर हमारे मुंह से नबूवत निकलेगी. God is taking prophet Ezekiel to the dry bone and asking Ezekiel, will this bone will get alive? देखिए एजेकियल नबी को परमेश्वर लेके चलता है और कहता है कि ये सूखे जो हड्डियां हैं क्या ये जीवित होंगे. Ezekiel don't know. एजेकियल को तो पता ही नहीं है. Lord, I don't know. You know this. एजेकियल ने कहा कि मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु आप जानते हैं. Today God is opening your eye. और तेरी आंखों को आज की रात प्रभु खोल रहा है. Any person can be your helper from heaven in Jesus' name. और जो स्वर्ग से है वो कोई भी व्यक्ति आपका सहायता बन सकता The है. Holy Spirit is coming. पवित्र आत्मा आ रहा है. Maturity is coming. आपके अंदर एक जान आ रहा है. You prophesy, you take Kashmir. You prophesy, you take India. You prophesy, you take wherever you are in Jesus' name. आप भविष्यवाणी करेंगे, नाबूद करेंगे और आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा. आप जहां हैं उसे नाबूद के तौर से आपको मिल जाएगा. Who said you are powerless? किसने कहा कि आप बलहीन हैं? Devil. शत्रु, शैतान ने कहा. Who made you powerful? किसने आपको शक्तिशाली बनाया? Jesus Christ and his righteousness given to us freely. यीशु मसीह और उनकी नीति जो धार्मिकता हमें जो मिली है मुफ्त में. This is the spiritual body of Christ. और ये है आत्मिक जो शरीर है प्रभु यीशु मसीह का. Ephesians 1:21-23 says, whoever coming to the church, all their weakness will be covered in the body of Christ. Hallelujah. और इफिसियन की किताब में हम पढ़ते हैं, पहला अध्याय में पढ़ते हैं 21वां वचन में कि जो भी कलीसिया में आता है उसकी बलहीनता जो है प्रभु के शरीर में ढल जाता है. We are all weak in our body, but no one is weak in the spirit. हाँ हम शरीर के तौर पर हम बलहीन हैं, लेकिन आत्मिक रूप से हम बलहीन नहीं हैं. So every obedience bring miracle. और सभी आज्ञाकारी जब हम बनते हैं, जब प्रभु की आज्ञा हम करते हैं, तब अद्भुत चीजें होती हैं. Obedience to the word of God is important. प्रभु के वचन की ओर आज्ञा का पालन करना मिरेकल्स लाता है. Pastor Sam started beautifully. Lord, we need one-minded, one accord, one spirit. जो पास्टर सैम है उन्होंने अच्छी शुरुआत की. उन्होंने कहा कि प्रभु हमें एक मन चाहिए, हमें एक दिल चाहिए प्रभु. What is that meaning? उसकी मतलब क्या है? God gave the kingdom plan to the pastor and we are all connecting to his plan. और प्रभु ने उन्हें एक योजना दिया और उस योजना से हम सभी लोग जुड़ रहे हैं. Immediately devil will leave. और तभी जो शैतान है वो भाग जाएगा. Immediately the power of God will come. झट से प्रभु की शक्ति जो है हमारे अंदर आ जाएगा. There is no place for the devil, no place for the sickness, no place for the fear. In Jesus' name. वहां बीमारियों की कोई स्थान नहीं है, वहां डर का कोई स्थान नहीं है, वहां शैतान का कोई स्थान नहीं है यीशु मसीह के नाम से. The church is not based on people's opinion. That's called community. But church is based on God's opinion.
कलीसिया की जो नींव है वो किसी मनुष्य की आशय नहीं है, लेकिन जो कलीसिया की नींव है वो प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग के राज्य है। The God will give the plan to the pastor and pastor will execute the plan. Then the order of Melchizedek is alive. जो पासवान है उन्हें प्रभु अपनी योजना को देते हैं और उस योजना को वो जब पूर्ण करते हैं तब देखिए मलकीसदेक के रूप से वो योजना यहाँ पूर्ण होती है। The Melchizedek order is coming in every church. For that, corona is happening everywhere. और जहां जहां कोरोना कलीसिया को झुंझला रहा है, जहां कोरोना से जूझ रहे हैं आप, वहां मलकीसदेक के ऑर्डर पे कुछ काम हो रहे हैं। In the Melchizedek order, Jesus the head and the pastors are the mouth. You and I, we are the body of Christ. और जहां हम देखते हैं कि मलकीसदेक का जो ऑर्डर होता है, गण होता है, उसके रूप से यीशु मसीह हमारा सर है। Yearly rain take place in Jerusalem. Later rain is going to take place all over the world. जो पहले का जो बारिश था वो हुआ कहाँ पे? यरूशलेम में। और दूसरा अब जो होने वाला है वो पूरे राज्य संसार में होगा। And everywhere the revival is coming. और हर एक जगह बेदारी जाग रही है। Every church is going to rule that area, rule that government. What they say, that's a final. और हर कलीसिया उस जगह पर राज्य करेगा, उस राजनीति लोगों पर राज्य करेगा। When you have this understanding, eternal life already started in you. और जब आप इस चीज को समझ जाते हैं, अनंत जीवन आपके अंदर चालू हो जाता है। Eternal life is now inside you. Eternal. अनंत जीवन आपके अंदर है। That's what 1 John 5, 10 up to 13 we are reading. 1 John chapter 5, 10 up to 13. When Jesus is coming, eternal life already started. और पहले यूहन्ना की किताब 5वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि यीशु मसीह के आने से ही अनंत जीवन शुरुआत हो जाती है। We are seated with Christ in the throne. From there we are seeing the ground. We are not seeing in the ground and looking the Father. No. The church place, we are seated at the right side of the Father with Jesus Christ. और कलीसिया के स्थापित रूप से हम अगर देखें तो हम यीशु मसीह के साथ कहाँ बैठे हैं? उस सिंहासनों पर बैठे हैं और हम वहां पर बैठे हुए नीचे देख रहे हैं। जमीन से हम ऊपर नहीं देखते, वहां से कलीसिया कहाँ पर है? ऊपर है और हम नीचे को देखते हैं। Now I am taking you to that place. और मैं आपको वहां ले जाता हूँ। You are all seated with Christ now. और अभी देखो आप प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठे हुए हैं। What you say, God is honoring your word. और आप जो बोलेंगे उसकी रिस्पेक्ट जो है प्रभु करता है। Please understand this truth. इसे आप समझ जाइए। According to your word, the rain is stopped. According to the word, the rain is going to come. और आप जो बोलेंगे वही होगा। अगर आप बोलेंगे बारिश हो तो हो जाएगा, अगर नहीं बोलेंगे तो नहीं होगा। Lord, I declare miracle for everyone right away wherever they are. प्रभु मैं हर एक व्यक्ति के लिए एक चमत्कार को बोलता हूँ जहां भी वो हैं। Let them feel your touch, feel your presence wherever they are. और वो आपके स्पर्शन को समझ सके आज की रात जहां भी वो है प्रभु। Already the power of God is everywhere. अभी हाल ही प्रभु की शक्ति हर एक जगह पे बढ़ चुकी है। You are the children of the living God. You are going to rule your place from today in Jesus' name. मैं यीशु मसीह के नाम से बोलता हूं कि आप जीवित परमेश्वर के खुदावंद के बच्चे हैं और आप जहां भी हैं उस जगह को आप राज्य करेंगे। This relationship make you powerful. और ये जो बंधन है ये आपको शक्तिशाली बनाएगा। Indestructible life is started already. और एक जीवन जो कभी अविनाश है ऐसा जीवन शुरू हो चुका है। Devil is not powerful. शैतान शक्तिशाली नहीं है। All the power was removed by Jesus Christ in the cross. Devil become powerless. और जो शक्ति है शैतान के अंदर उसे परमेश्वर ने क्रूस पे हमें जीत लिया और उसे निकाल लिया है और अब शैतान प्रभावशाली है। All the power was removed, stripped out from the devil, and all the power is given to the church. हर एक शक्ति को जो शैतान के हाथ में था उसे फाड़ कर निकाल कर प्रभु ने अपने कलीसिया को वो दे दिया है। The key is given to the church. नहीं देखिए चाबी या कुंजी किसके पास है? वो कलीसिया के हाथों में है आज। Whatever you open, it is open. Whatever you close, it is closed. आप जो खोलेंगे वो खुला रहेगा, आप जो बंद करेंगे वो बंद रहेगा। You are going to do it in the spirit of Jesus Christ. और आप में प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा आप वो करेंगे जरूर। Not with selfishness.
अपने 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 सेल्फिश के साथ नहीं आप ये Not करेंगे। flesh and blood cannot inherit the kingdom of heaven. Flesh and blood. और स्वार्थी होकर अपने शरीर और अपने रक्त के साथ ये नहीं कर सकते आप। Then what will inherit the kingdom? Spirit and life. और क्या अवकाश बनाएगा स्वर्ग को? वो है आत्मा और अपना अपना मन, Spirit and life. और जो है जीवन और अपनी आत्मा। What I am speaking to you is the word spirit and life is coming to you. और मैं जो बोल रहा हूँ आपसे, जो इसकी प्रचार में कर रहा हूँ, वो प्रभु का वचन है, और वो जो है वो आत्मा और जीवन है। You will be completely free from today. और നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രീ മോചിതരാകുവാണ്. Angels are coming, dreams are coming. കർത്താവിന്റെ ദൂതന്മാർ വരുന്നു, ദൂത് आपके साथ आ रहे हैं. Tonight God is going to visit everyone in Jesus' name. ഇന്നത്തെ രാത്രിയിൽ ദൈവം എല്ലാവരെയും വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പ്രഭു आपको विजिट कर रहा है आज के. And the word you heard keep on ringing in your ears from now in Jesus' name. ഈ വചനം നിങ്ങൾ കേട്ടത് നിങ്ങൾ ചെവിയിൽ അലയടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. आपके कानों में ये वचन गूंजता रहे. Until we see in the mid-air, oh, this word will be ringing in your ears in Jesus' mighty name. യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ നമ്മൾ മധ്യാകാശത്തിൽ കാണുന്നത് വരെ ഈ ശബ്ദം, ഈ വചനം നിങ്ങളുടെ ചെവികളിൽ ആഞ്ഞടിച്ചു And കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. you will rule your territory from now. No more devil in your territory. You are the king for that area in Jesus' name. നിങ്ങളുടെ സ്ഥലങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ ഇടങ്ങളെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഭരിക്കും. അവിടെ ശൈത്താനില്ല, അവിടെ പിശാചില്ല, അവിടെ നിങ്ങളുടെ അധികാരമാണ് ഇനി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. When you are going there, devil will move out. When you move in, devil move out. നിങ്ങൾ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പിശാച് പുറത്തേക്ക് പോകും. When you are going in, Jesus coming with you. Jesus coming with you. നിങ്ങൾ അകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ യേശു നിങ്ങളുടെ കൂടെ അകത്ത് വരും. You are no more alone from now. നിങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽ ഒറ്റയ്ക്കല്ല. Melchizedek order is activated in your life. മൽക്കീസദേക്കിന്റെ പ്രകാരം ആമേൻ, ആ ഓർഡർ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ You സംഭവിക്കുകയാണ്. simply connect with your spiritual father, connect with your pastor. നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്ററുമായിട്ട്, നിങ്ങളുടെ ആത്മീക പിതാവുമായിട്ടൊരു ബന്ധത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരിക. I am only a teacher for you. ഞാനൊരു ഒരു പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചറിനെ പോലെയാണ് നിങ്ങൾ. For your house I cannot be a father. നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിന് ഞാനൊരു പിതാവായിരിക്കുന്നത് കഴിയുകയില്ല. For you, you have your spiritual father. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു ആത്മീക പിതാവുണ്ട്. From that father's mouth all will happen in your life. ആ പിതാവിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും. Father, I thank you for the great truth. ഫാദർ, പിതാവേ, ഞങ്ങൾ ഈ നല്ല സത്യത്തിനായി നന്ദി പറയുന്നു. You opened our eyes. നീ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ തുറന്നല്ലോ. We were practicing the Melchizedek order from now. ഞങ്ങൾ മൽക്കിസദേക്കിന്റെ ഓർഡറിനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരട്ടെ. You are the heavenly Melchizedek. അങ്ങാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ മൽക്കിസദേക്ക്. Come and rule everyone. വന്ന് എല്ലാവരും ഭരിക്കണമേ പിതാവേ. When you are ruling everyone, then we can rule this world easily. അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഭരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്തെ ഭരിക്കുന്നതിന് കർത്താവേ കഴിയുമല്ലോ. When we obey to your word, devil will obey to our word. അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പിശാച് ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകളെ അനുസരിക്കുമല്ലോ. Thank you, Father, for this power given to the church. ദൈവത്തിന്റെ സഭയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ശക്തിക്ക് നന്ദി പറയുന്നു അപ്പ. No church is weak, no church is poor. ഒരു സഭയും ശക്തിയില്ലാത്തതല്ല, ഒരു സഭയും ദരിദ്ര സഭയല്ല. You are the head of the church. നിങ്ങൾ ആമേൻ അപ്പ, അങ്ങാണ് സഭയുടെ ശിരസ്. You are the body of Christ. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സഭയുടെ ശരീരമാണ്. Hallelujah. All weakness is removed now. എല്ലാ വീക്ക്നെസ്സും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എടുത്തു കളയട്ടെ. A new strength is coming. ഒരു പുതിയ ശക്തി വരട്ടെ. God told the heavenly Melchizedek, Jesus, sit at my right side. I bring all your enemy your footstool. യേശുവേ, അങ്ങ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്നെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തുന്ന എല്ലാ ശത്രുക്കളെയും നിന്റെ പാദപീഠമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. Now I see all your devil coming below your feet. എല്ലാ ശത്രുവും, എല്ലാ പിശാചും അവന്റെ കാലിനടിയിലായിരിക്കും. You are seated in the church. You are seated in the church. Father God, bring all the devil below your feet right now in Jesus' name. അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ സഭയിലുണ്ടല്ലോ. അങ്ങയുടെ കാൽ കീഴിൽ സകല പിശാചിനെയും സകല ശത്രുക്കളെയും ആക്കണം. In the 7 days, you are going to have a good news from heaven. ഈ 7 ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നല്ല വാർത്ത നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന്. Good dreams are coming.
ഒരു നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരും. Your future is protected. നിങ്ങളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാകും. Christ is our hope of our glory. ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പ്രത്യാശയുടെ കിരണമാണല്ലോ. In Jesus' name, amen, amen, amen. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ആമേൻ. Amen, amen. God bless you all. Thanks for this opportunity. ആമേൻ. ആമേൻ. Let's praise God.